If there is any place in the world today that offers a tempered vision of Islam, it is Pakistan. But if there is any place in the world that preaches love and peace through Islam, it is also Pakistan. Sufism is not a sect like Shiism or Sunnism, but rather the mystical side of Islam, a personal and experiential approach to Allah. Virtually, every religion in the world uses music as a part of its expression of devotion. Rarely, however, can one find a musical practice that has survived in much the same form over such an extended period of time as is the case with Qawwali. कव्वाली मुश्तक है लफ्ज़ कौल से। कौल एक अरेबिक लफ्ज़ है। कौल कहा जाता है किसी ऑथेंटिक पर्सनालिटी की वॉइस को और उनकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले हों। और ऑथेंटिक पर्सनालिटीज़ जो हैं वो दुनिया में बहुत से हैं, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, औलिया अल्लाह हैं, नबी हैं। उनके फ़रमान को कौल कहा जाता है। और सबसे अफजल कौल जो है वो कौल रसूल माना गया। और कव्वाली का जो आगाज़ है वो 1000 साल पहले था। उस वक्त इसका नाम कव्वाली नहीं था। इसको वो जो परफॉर्म होता था, जो ज़िक्र व अज़कार उसको कहा जाता था, ज़िक्र की महफ़िल, अल्लाहु अल्लाहु या रसूल अल्लाह, इस तरह के जो वजदानी अल्फाज होते थे वो औलिया अल्लाह अपनी महफ़िल सजा कर बैठते थे और उसमें ज़िक्र व अज़कार करते थे। उस ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल को महफ़िल समा कहा जाता था। कव्वाली हमारे बुज़ुर्गान दीन ने इसे शुरू किया। हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हिंदुस्तान में उनका मज़ार है और उन्होंने इस सिलसिले को चलाया आज से तकरीबन 850 साल पहले। और ये एक मोहब्बत का और अमन का पैगाम है। इसमें नात शरीफ पढ़ी जाती है, मौला अली की शान में कौल पढ़ा जाता है और बुजुर्गान दीन की मनक़बत पढ़ी जाती है। Sufi khanqahs were places for service towards humanity and peace. Sheikh Moinuddin Chishti held that the highest form of devotion to God is possible through redressing miseries of the distressed, helping the needy, and feeding the hungry. It is this aspect of Sufism in South Asia which makes Sufis the most revered by people from all walks of life, irrespective of caste, creed, and religious differences. Still today, the shrines of these Sufi saints host classical musical contests. Festivals and carnivals are abound with dhamal, where devotees are seen whirling in a ritual revelry. Men, and sometimes women, dance and swirl about in the urge of seeking enlightenment. A traditional drum called the dhol beats deafeningly and hypnotically, sending everyone in a trance that makes them forget surroundings and tread in a voyage of ecstasy. मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सूफीज़म और मौसीकी का चोली दामन का साथ है। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।
हमने मौलाना रूमी की बात की, हमने अदल हक गदारा जिसने लगाया, मंसूर हल्लाज उनकी बात की। तो मंसूर हल्लाज कैसे गए सूली पे? रक्स करते हुए गए, गाते हुए गए। और बहुत मशहूर है, उसकी तरफ तो महज इशारा करने की ज़रूरत है कि मौलाना रूमी का दरवेशों का रक्स क्या था, एक्सरे में आता था। तो ये जो चीज़ है, ये एक तरह से रूह का रक्स है। रूह चूँकि हमारे बदन में है तो अकेली तो रक्स नहीं कर सकती ना, अंदर है। तो जब रूहानी तौर पे आदमी इंस्पायर होगा तो फिर रूह जिधर ले जाएगी उधर ही ले जाएगी। The explosion of bombs or the crack of gunshots don't prevent these devotees from coming back to hear the serene melodies of the harmonium, the sitar, or the tabla. In the most remote parts of Pakistan, and in fact, all of South Asia, you'll find people who may be uneducated in the worldly sense. They may not speak English, but a closer look will reveal that their hearts brim with the knowledge of the spiritual sense. In their teachings, they've left behind a gift of peace, which is unraveling itself in Pakistan in the form of music, poetry, and dance. I believe that music and the arts can play an instrumental and vital role, because a political speech may convince you or a good lecture may convince you intellectually, but it's the arts that move you to rouse your passions for change. And without the kind of forces that we're confronting, we cannot defeat those kind of forces without that passion for struggle and sacrifice. And that's where I believe my music fits in, that's where Amjad Sabri's music fits in, that's where Sufi music fits in. Because all this music preaches, the most important lesson it preaches is जिसको उर्दू में कहते हैं वहदतुल इंसानियत का सबक, the oneness of humanity. Unfortunately though, this combination of love and knowledge is overlooked by many media outlets in their endeavors to paint a negative picture of Islam. Perhaps there is a need to stop and reflect again on Islam, and this time through a Sufi lens. And you will find that nearly all of the principles it preaches are universal in nature. Along the way, you will also find that Pakistan is not just a terrorist hub, but a land that gave birth to the most noble Sufi saints. Saints who still retain such an eternal power that millions still flock to their shrines up to this day and let their souls sway to the soft melodies of love and peace. कुफर दिया